Okay, so let me give you the group task now. This is the group task number 4. For this is for chartered accountancy, and that is chartered accountants which are going for HPCL. So they have group task, and we will be going for 4th group task in that particular series today. So let me bring on your screen this particular task, which now you have to note down this, and then you are to I'll give you some time, let's say 2 minutes, and then you will be finding out some relevant points, and then we can go forward for this. So let's see this particular task number 4. There's a petrol pump under your area of jurisdiction. As marketing official of HPCL, you are working in HPCL, and there is a a pump which comes under your jurisdiction. Now the pump has large land area on which pump is created, but still a lot of area is lying vacant. So what steps can you suggest to the owner of petrol pump so that he generates the funds through the resources which are available? So see this situation, and I'll give you 2 minutes to think, and then we start. Okay, so I think you have gone through this now case study which is given to you. So I think now you can start discussing, and make sure that at the end you need to hit some consensus. You need to suggest me point wise some important things to be done to increase the revenue of this particular person. So this has to be consensus based discussion, and it is a group task, so you have to behave in a group. Right, so please proceed ahead now and start your discussion. Hi friends, this is Priyanka here, and we are given this group task. The group task is we have a petrol bunk in our jurisdiction. We are actually working in HPCN, and the petrol bunk has a vacant site. So we have to utilize the vacant site, make use of the resources for revenue generation. Now, I would like to open the house for discussion.
I think we should first analyze the area, which type of area, whether it is That is- urban or rural. Yes, Because if it is- I think let Bhupender, I complete first. I think okay. I think first we analyze the area, how it is, like it's rural or urban, and we should analyze whether there is EV hit EV hitting in that area or not, whether the person is buying the EVs or not. If they are buying EVs, I think the battery swapping area can be a benefit for the owner. But it is mentioned here that we have to make the use of available resources, not additional resources can be. No, there is based on there is urban or nothing rural mentioned. land, what is the idea for us? What we going to do with that decision? Actually, एक्चुअली सबसे in पहले today's era, हमें देखने होंगे कि पेट्रोल पंप के मालिक के पास एक्चुअली में क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, हाँ, कितना वो ये सब लोग क्या फंड्स वगैरह जो जिसकी वजह से वो एक्चुअली में डिफाइन कर पाएंगे कि हम उससे बजट पूछना चाहिए ना, उसका कितना बजट अवेलेबल है, सबसे पहले ये स्टेप होना चाहिए। हम ये भी कर सकते हैं कि जो वैकेंट एरिया है उसे भी आगे लीज पर दे सकते हैं, और सेकंड ऑप्शन हो सकता है कि उसे कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम दे सकते हैं, उससे बात करके। गिविंग लीज विल बी बेटर ऑप्शन। एक्चुअली उस पे हम कंस्ट्रक्शन करके वेयरहाउस वगैरह कंस्ट्रक्ट करके फिर उसको हम लीज पे दे सकते हैं ना। See, we should ensure that no hazardous products are used because it is very near to, very adjacent to petrol bunks. We have to ensure that they don't use any fireworks or some sort of safety need to be considered. सबसे पहले एक्चुअली हमें रिसर्च करनी होगी, उसके बाद में कि उस इलाके में क्या क्या हम एक्चुअली में सेटअप कर सकते हैं। नहीं, जैसे एक ईवी का ईवी अगर हम रिसर्च नहीं करेंगे तो हमें पता क्या चलेगा कि एक्चुअली में वहाँ क्या क्या डिमांड्स है। अगर एक्चुअली में हम ऐसी चीजें क्रिएट कर रहे हैं तो जिनकी डिमांड ही नहीं है, तो अगर एरिया वैसा है, हम वही कह रहे एरिया का एक सर्वे करना पड़ेगा, ये देखना एरिया पड़ेगा है कैसा। ईवी का मार्केट क्या इन्वॉल्व हो रहा है, वहाँ पे इवॉल्व हो रहा है क्या, क्योंकि बहुत जरूरी है देखना। अगर ईवी का मार्केट क्योंकि राइजिंग मार्केट है, तो इसके लिए क्या अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। तो मेरे को लगता है कि ये बहुत अच्छा स्कोप है उनके लिए, अर्निंग सोर्स हो सकता है आगे चल के। और जो पहले नहीं रखते वो उनकी प्रायोरिटीज में रहता है, जैसे एचपीसीएल की प्रायोरिटी में है वो बेसिकली कि उन्हें इतने इंस्टॉल करने हैं, तो वो पेट्रोल पंप के उसी एरिया में करते हैं। तो वो जो एडिशनल लैंड है उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसी का बता रहा हूँ मैं। उसमें इलेक्ट्रिक का चार्ज, ईवी चार्जिंग हो सकता है, या फिर बैटरी स्वैपिंग, क्योंकि आज के टाइम पे एक बैटरी स्वैपिंग गवर्नमेंट भी कंसीडर कर रही है। तो अगर वो अपने पास लैंड एरिया एक्स्ट्रा लैंड बची हुई है, उसके लिए जो फंड रिक्वायरमेंट है ज्यादा नहीं होगी। Raju, I agree with, but we can options we have. Actually, we can discuss not only one. We can suggest many ideas because he has lot of land. हाँ, जमीन है अपने पास में, और स्वैपिंग एरिया या फिर चार्जिंग एरिया अपना इतना बना सकते हैं वहाँ पे, और एक ओनर को बेनिफिट करेगा। Guys, I have a point. This statement to HP petrol bank and HP EV station near adjacent to them, so that will be beneficial for us. To keeping the brand value will be okay, will be good by keeping the HP petrol bank and HP electric vehicle. Actually, it is emerging for the emerging market product for the HPCL. So currently we are having some 1100 stations. So we are expecting some 5,000 in the current financial year. So actually HPCL has tie with the OEMs. Can I have it advantage? Yes, I agree with you. I agree with you. So we can take it as a EV charging station swapping. That would be good option. Also friends, actually मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे हम प्रैक्टिकली चेक देखते हैं कि पेट्रोल पंप के आसपास में मार्केट भी डेवलप किया जाता है। अगर मार्केट नहीं है तो एक्चुअली में वो अपना मार्केट डेवलप करते हैं और उसे लीज पे देते हैं, जिससे उनको काफी प्रॉफिट होता है पेट्रोल पंप के मालिक को। I want to add one point. Actually हम रिटेल शॉप वगैरह ओपन कर सकते हैं, जैसे एरिया कैसा है, जो HPCL की जो पेट्रोकेमिकल, जैसे अगर वहाँ स्टेशनरी और ये जो जिन पहले में सर्वे करना पड़ेगा उधर। गाइस एक करके बात करो ना, और भूपेंद्र को मौका देना चाहिए। गाइस 3-4 लोग मत बोलो, एक करके बात करो। I'll tell about this again कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा लैंड है, we can use
यूटिलाइज दैट कि जैसे वहाँ पे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका यूज होता है, जैसे जो मेनली ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए यूज होते हैं, ठीक है, जैसे IOCL का सर्वो है, बट HPCL का भी कुछ होगा ऐसे, सो वी कैन प्रोवाइड ऑल देम देयर इटसेल्फ, सो ये भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये तो पेट्रोल पंप पे ही प्रोवाइड कर सकते हैं, ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा, इसके लिए एडिशनल लैंड के लिए वो जरूरत नहीं होगी। इसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कितना लैंड है हमारे पास, वो हाईवे पे है या फिर मेन ट्रैफिक रूट पे है, हम ये सारी चीजें भी हमें देखनी पड़ेगी कि कहाँ पे है वो। तो हमें कुछ चीज पहले अज्यूम तो करनी होगी कि पहले हाँ, वो एरिया है कैसा। तो पहले अपने को एरिया एनालाइज करना पड़ेगा पहले। अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि एरिया है क्या। हाँ, एरिया कैसा है। अगर मान लो आज के टाइम पे जैसे कि मोस्ट अगर सिटीज में देखोगे तो एक ईवी वाला मार्केट बहुत ज्यादा हाइप कर रहा है। अगर मेट्रो सिटीज होगी स्टेप वाइज जाएगा, स्टेप वाइज पहले सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक्चुअली में हमें रिसर्च करनी होगी इलाके, एक्चुअली मार्केट का सर्वे लेना होगा कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या लोगों की। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट आपने बोला वीरेंद्र कि सर्वे करना पड़ेगा हमें, क्योंकि सर्वे से ही हमें पता लगेगा कि वहाँ के एरिया की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हम अपना कुछ इंस्टॉल कर सकते हैं वहाँ। नहीं तो हम इंस्टॉल कुछ कर देंगे और उसकी डिमांड हुई नहीं तो वो उसको एक्चुअली में हम दो कैटेगरीज में बांट लेते हैं कि एक रूरल एरिया में पेट्रोल पंप है और एक एक्चुअली में सिटी में है। तो उन दो के हिसाब से हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली में दोनों पे के हम कुछ पॉइंट लिख लेते हैं जिससे हम दोनों में उस केस के हिसाब से एक्चुअली में उनको बता सकते हैं कि क्या क्या एक्चुअली में वो इंस्टॉल कर सकते हैं या क्या क्या वहाँ पे वो डेवलपमेंट कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो कोई जैसे रूरल एरिया में अगर होगी तो वहाँ हम साइकिल रिपेयर शॉप I think Priyanka want to add something. We can provide the motor vehicle repair services, right? Yes. Some space. It will be very useful because when they come in highways or some in highways also, when there's a petrol bunk, there will be motor vehicle repair issues also. Sometimes it suddenly breaks down and people will be in need of some repair services also. When there's a petrol bunk and when there's a repair services beside adjacent only, it will be very useful for the people. But air filling station can from the commercial point air of view, filling station, gas we need filling to think station. from the commercial point of view as a HPCL employee. So, Yes, so that will be, so what is the issue with the EV stations? Just want Yes, to that is add, also fine. That is also fine. That is also very we good can idea. have EV के how साथ many कौन are सपोर्ट okay कर with रहा है? that? I EV के support साथ कौन सपोर्ट कर रहा It है? is also possible depending on the condition. Depend on the condition की सिटी में है या सर्वे के हिसाब से अपने को क्या लगता है? रूरल में है। Okay, whatever, whether it is in the rural or urban, it will not affect. Actually, the land will be not owned by us. It will be some other will be have been taken leased by the that HPCL owner. So we should not be thinking taking whatever other things. We need to as a marketing fellow we need to think from that point of view. So we need to generate revenue to HPCL. So that will be EV station is a better option. I was thinking. Yes. So Okay, you can in that way, I think हमें पेट्रोल other पंप के options मालिक को are to सजेस्ट discuss. करना है कि एक्चुअली में वो डेवलपमेंट क्या कर सकता है। एक्चुअली में Yes. मुझे तो ये लगा कि एक्चुअली में लेकिन हमें एक उससे ये चीज- सजेस्ट करना है कि वो that I was कैसे एक्चुअली में that was- रेवेन्यू क्रिएट कर सकता है अपने लिए। आई थिंक ये भी देखना होगा कि यहाँ फ्यूचर में पर बेनिफिट क्या है। बहुत सारे एरिया, लॉट ऑफ जैसे- एरिया पड़ा हुआ है। जैसे और HPCL का भी टारगेट है कि resources available में 5000 काम करना है। स्टेशन लगाने, ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने, तो Yes. वो टारगेट भी अचीव होगा और और ये दूसरा लैंड का लोगों को यूटिलाइजेशन भी हो हेल्प जाएगा, मिलेगी। लैंड लोग का इसके यूटिलाइजेशन भी भरोसे होगा, EV लेते नहीं है। टारगेट भी होगा, एक- ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो रहे हैं। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो रहा है। कंडीशन और लैंड कितना है उसके हिसाब से यार यहाँ कार वॉशिंग गाइस बोला हुआ है लॉट ऑफ एरिया अवेलेबल है, यहाँ पर लॉट ऑफ एरिया वैकेंट पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे जो ऑटोमोबाइल्स हैं, जो व्हीकल्स हैं, वो ज्यादा आने की ट्राई करते हैं कि हाँ वहाँ पे कुछ है ऐसा। हाँ, तो एरिया अगर काफी है तो उसमें जैसे कि चार्जिंग के लिए कम से कम 4 गाड़ियां खड़ी रहती हैं, तो उसके लिए कम से कम इतना एरिया तो चाहिए। 4 गाड़ियां 5 गाड़ियां एनी टाइम चार्जिंग के लिए हाँ, इतनी स्पेस होनी चाहिए। एरिया वाइज हम लोग सारे के लिए अलग स्टडी बना दे जाएंगे। रूरल एरिया है तो वहाँ पर हम लोग को रिपेयर सब खोलना चाहिए, हाँ, क्योंकि rural पूरे गाँव area- में Okay, one लेकिन इसमें thing. HPCL I का think फायदा we होगा। need to distance first travel discuss करना पड़ता actually है। rural area or city area one decided and then another one. दोनों के हिसाब से we वही take कर लेते हैं। One thing, whether it is rural or बोलना urban, चाह रहा हूँ, Start on the जैसे city. क्या है? Actually, we think the Guys, one petrol करके pump बोल in रहे the हैं, city, मतलब so we मैं can हो discuss जा on रहा है that पूरा। and later we can so that. Okay, हाँ,
एक एक petrol करके bunk दोनों is सिनेरियो के yeah. हिसाब से रूरल और अर्बन दोनों के हिसाब से सिनेरियो बना लेते हैं, फिर कॉस्ट Yes, एस्टिमेट yes. करते हैं अपन। तो Actually, एक्चुअली हम if it पहले is a रूरल को rural डिस्कस or कर लेते हैं। urban, what is the difference you are thinking actually? Like That in would be rural, EVs not be used much. Like in rural, EVs will not be. ये अलग हो जाएगा ना, वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स अलग हो जाएगी। रूरल में क्या होता है कि Okay. In that point, it's okay. I'll agree with that. If it is a rural, we should not be going for the EVs. EVs. So if it The is cost of urban, EVs is high. It cannot be afforded by rural area people. Actually, we can do survey also that electric vehicle वहाँ पर अगर रूरल एरिया है तो ईवी नहीं कर सकते, तो एक बार सर्वे करके पता कर सकते हैं ना कि हो सकता है वहाँ पर ऐसा उन लोगों को प्रमोट कर रहे हो, ईवी को ज्यादा फेवर में हो, तो हम कर सकते हैं ना। yes. HPCL के भी कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे IUCL के हैं प्रोडक्ट्स जो जैसे जो ट्रैक्टर्स और इन सब में यूज होते होंगे, ट्रैक्टर्स वगैरह में भी यूज होते हैं, ऑयल्स वगैरह, लुब्रिकेंट्स वगैरह जो यूज होते हैं, तो उनकी शॉप हम खोल सकते हैं। Lubricant oil, that's Actually क्या होता है, selling as a retail. So that will be having some low space मेरे only. ओपिनियन में I think रूरल so. एरिया में वो गाइस आई वांट टू ऐड वन पॉइंट। सबसे पहले हमें क्या करना है, उनसे बजट पूछना है उनका, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमारे पास बहुत सारा एरिया है तो हम अलग अलग कर सकते हैं। लाइक जैसे उन्होंने बोला ईवी स्टेशन, एंड कुछ पे हम वो रिपेयर सर्विसेज कर सकते हैं, एंड कुछ पे सर्वे करके वहाँ के लोगों की क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग भी हम कुछ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके पहले उसके बाद सर्वे लीज पे होगा, दे सकते हैं। पहले सर्वे होना चाहिए, उसके बाद में अपने को मालूम चलेंगे ऑप्शन क्या क्या है, उसके बाद में हमको उनका कॉस्ट एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा, फिर हमें उनसे बजट पूछना पड़ेगा उनका बजट क्या है जो उसके बेसिस पे वो सूट कर रहा है उनके बजट को। नहीं, आई थिंक फर्स्ट वी आस्क देम बजट, सो अकॉर्डिंग टू द बजट वी कैन डिसाइड व्हाट एक्चुअली। नहीं, मार्केट की नीड भी तो जानना पहले जरूरी है, मार्केट की नीड मालूम चलेगी तभी हम मार्केट की नीड तो हम जान लेंगे, लेकिन अगर उसके बाद नहीं है तो मार्केट की नीड के हिसाब से हम कैसे कर पाएंगे। एक्चुअली पेट्रोल पंप के मालिक के पास पैसे भी तो होने चाहिए जितने लगाने के लिए। एक्चुअली I think we can finalize the points which are to be considered for this decision. Actually, rather than taking the decision, we can list down the points which we have to consider for taking. And that is also summarize कि अभी तक yes, we have to summarize the points. What are all the things that we have to consider for this decision, and then we can summarize the task, I think. So based on the requirements, decision will be taken accordingly. If you follow all these steps, then decision can be taken accordingly. In that तो बजट अगर लेते तो उसके हिसाब से अपने को क्या क्या कॉस्ट होनी चाहिए सबकी। अगर ईवी की कॉस्ट, ईवी सेटअप करने की कॉस्ट लगाया जाए तो कितनी कॉस्ट हो सकती है? उसके लिए हम टीम बनाएंगे ना, उसमें टीम में अलग अलग प्रोफेशनल्स को इंक्लूड करेंगे, इंजीनियर्स को करना पड़ेगा और इनकी कोटेशन लेनी पड़ेगी अपने को। हाँ, वेंडर से कोटेशन और ये सब। कॉस्ट के लिए तो हम यही कर सकते हैं, सबको इंक्लूड ही करना पड़ेगा हमने अपनी टीम में। We have to ask for the budget, how much is the amount allocated. Second one is that we have to make a survey which is the service which is required or which is the product which is required in that particular area. That survey needs to be done, and then accordingly we have to decide what is the requirement, what is the major requirement, and which has the future prospectus, and then we have to set up a thing in that place which will be commercially viable for us, which will give good profits. And as you said, we have to set up a team so that we would require we would get quotations for doing the work also. अगर रूरल एरिया हुआ तो सर्विस सेंटर भी खोल सकते हैं ताकि वहाँ पे जो लोग होते हैं उनको परेशानी नहीं होता है कि सर्विस वहाँ से जाके दूसरी सिटी में जाना पड़ता है सर्विस सेंटर। लेकिन रामेश्वर मेरे को एक्चुअली ऐसा लगता है कि हर एरिया में अगर आप सर्विस सेंटर की बात करो तो हर एक छोटे से छोटे एरिया में सर्विस सेंटर एक्चुअली मिल जाता है अपने को, तो वो इतना वाइबल हो कि नहीं हो यार मिल तो जाता है। एक्चुअली अब हमें रूरल को कंक्लूड करने की कोशिश करना चाहिए क्योंकि वी हैव नॉट सो मच टाइम। तो फिर रूरल में सर्विस सेंटर की बात करें, सर्विस सेंटर मार्केट शॉप्स दे ही कैन क्रिएट आल्सो, एंड लुब्रिकेंट्स वगैरह की शॉप खोल सकते हैं, ट्रैक्टर ज्यादा यूज होते हैं बिकॉज़ या दैट्स आल्सो गुड ऑप्शन इफ देयर फार्मिंग एरियाज आर मोर। एक्चुअली क्या है, देखो जो पेट्रोल पंप के बाद में एक ऑफिस होता है तो ऑफिस में मैक्सिमम आपको लुब्रिकेंट्स मिल ही जाते हैं। Yes, they'll display their products actually, definitely they'll display their products, all the products will be displayed in that room itself. और देखा जाए सर्विस सेंटर सही बात है, ट्रैक्टर और पिकअप और ट्रैक्टर रहते हैं ज्यादा, इनकी सर्विस वगैरह का ऑप्शन कर सकते हैं हम। तो इसमें सर्विस का ऑप्शन रख देंगे तो उसमें जो लुब्रिकेंट अगर चेंज करना होगा तो उसमें HPCL का भी फिर और का फायदा हो जाएगा।
I think construction HPCL material is की not शॉप भी into सेट की जा repairing, सकते हैं, right? क्योंकि I saw Not many into petrol pumps repairing, there near but while repairing, if there is construction need material shops to also have. replace the lubricant. कंस्ट्रक्शन मटेरियल में कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, प्लस वो बिजनेस से डाइवर्ट हो जाएगा पूरा कम्प्लीटली। हम लोग को उससे सोचना चाहिए जो बिजनेस रिलेटेड हो। जैसे कि रूरल एरिया है तो जैसा उसने बोला कार शॉप, रिपेयर शॉप, क्योंकि हो सकता है रूरल एरिया में रिपेयर कराने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है, तो वो But रिपेयर HPCL is not into repairing, right? HPCL is not into repairing, right? We are So not that we HPCL are business. We are providing actually ancillary services, not providing primary services. हाँ, Just like एडिशनल तो रिसोर्सेज सजेस्ट करने हैं हमें, related yes, we need services. to बेटर suggest ऑप्शन है। we need to suggest to the HPCL, not to the owner of the petrol pump, that servicing we center have to that suggest to will the be owner of the petrol is, pump. We are just marketing officer of the HPCL. तो वो We are सर्विस just the सेंटर owner of ओपन the करके petrol pump. लीज पे दे सकते हैं ना आगे। हाँ, अगर ये पास में होता तो एक point है। फायदा भी है, अगर लीज पे भी देते हैं, अगर सर्विस सेंटर पास में होता तो उसका एक बेनिफिट है, क्योंकि सर्विस में क्या है, बहुत सारा पेट्रोल वगैरह यूज करना या लुब्रिकेंट का यूज करना, ये सेल बढ़ा सकता है अपनी भी। एक तो लीज का बेनिफिट आएगा और एक लुब्रिकेंट का सेल होना और ये पेट्रोल का सेल होना, ये एक्स्ट्रा बढ़ेगा अपना। और योगेंद्र के पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा कि अगर वो रिपेयर शॉप पे आएंगे तो वो पेट्रोल भी खरीद सकते हैं पेट्रोल actually में, जैसे पेट्रोल करा की सकते हैं, डिमांड lubricants भी use कर इंक्रीज होगी सकते हैं। एक्चुअली में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम सर्विस मार्केट में डेवलप भी करते सर्विस हैं में हम तो भी पेट्रोल ये यूज इफेक्ट करते रहता है हैं। कि लोग एक्चुअली में वहां से आएंगे और पेट्रोल पंप का भी यूज कर सकते हैं एक्चुअली में अगर बिल्कुल, क्योंकि अच्छा आपने एरिया कभी हो। अगर वो सर्विस का एरिया टाइम देखा हो तो जो अपने फिल्टर्स क्लीन होते हैं वो हमेशा पेट्रोल प्रोडक्ट से होते हैं। दूसरा, सर्विस में हमेशा लुब्रिकेंट्स यूज होते ही होते हैं, के वो हमेशा अलावा काम आते हैं, तो और उससे क्या सेल कर बढ़ सकते सकते प्लेस हैं। करने होते हैं। अगर रूरल एरिया है तो बिल्कुल पॉल्यूशन बिल्कुल पेपर वगैरह बनता है, गैस स्टेशन जैसे कि सीएनजी वगैरह होता है, ये इसके लिए रूरल में बहुत दिक्कत होता है, किसी को पता करना होता है, तो बेटर अगर पॉल्यूशन वहां पर बना दे, पॉल्यूशन चेक करने के लिए, तो वो लोग के लिए सहूलियत हो वो जाएगा। एक गैस वैन से आती है, वो वैन तो वैसे भी खड़ी हो सकती है, तो उसमें हम ज्यादा एरिया नहीं जो चाहिए। गैस सिलेंडर का हाँ। रिटेल आउटलेट बना सकते हैं वहाँ HPCL के लिए। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेकिन वहाँ ये नहीं हाईली ज्यादा हो जाएगा, इनफेवेबल है उसके वो। लिए अलग से डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं, देना पड़ता है। मुझे आई थिंक अगर इलेक्ट्रिक बहुत व्हीकल के साथ convenience ज्यादा के लिए जाना चाहिए, क्योंकि कम पॉल्यूशन वगैरह भी The नहीं last होगा 2 और minutes रूरल for एरिया you है तो to वो now sum थोड़ा up. Last 2 कंपटीशन। minutes. Last 2 minutes, please sum up, and then some of you will conclude. ओके सर, तो हम फाइनली दो करते हैं, एक तो रूरल का करते हैं बजट और एक करते हैं हम अर्बन का। तीन अर्बन में करते हैं, ईवी Let's रूरल assume it metro as और urban only. Why to take two things? Assume it as a urban only, and we can. Okay. What I was thinking is we can one thing electrical vehicle thing, and one more thing. HP is into CNG station, right? We can even keep that CNG station. वैसे अर्बन में शिवा, ना आई वांट टू ऐड वन पॉइंट हियर। Yes. हमें ऑप्शन तो सारे लेके चलने पड़ेंगे ना, हमें नहीं पता अभी वो रूरल है या अर्बन है, तो आई थिंक हमें हाँ। डिवाइड तो करना वैसे चाहिए, भी रूरल में आप एक, देखोगे अर्बन कि में। प्रैक्टिकल हम केसेस लोग को में रूरल अर्बन अर्बन और एरियाज में मेट्रो छोड़ते लेके चला जाएगा। तो हम एक्चुअली में So, इसे दो ब्रॉड let's कैटेगरी में बांट let's सकते हैं और finalize for उसके हिसाब से urban. एक्चुअली में So ऑप्शन after that we can finalize for rural. लिस्ट आउट। Time is very less, right? Yes. ओके फाइनली लिस्ट बना लेते हैं हम, फिर भी बजट मेरे हिसाब से दोनों का बना लेते हैं हम। for urban, what you say for the EV or CNG station? That will be I better. I also was thinking. yes, I agree. I agree. which I also had one more And मेरे ख्याल से मेट्रो के लिए उसमें एक हाइड्रोजन भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है फ्यूचर बेस्ड एनर्जी वही होगा। नहीं, अभी वो हाइड्रोजन अभी इजीली अवेलेबल नहीं I है। also आई सेड I also हाइड्रोजन का अभी इन नहीं। केस ऑफ द और मेट्रो सेकंड एक्चुअली हम ईवी शॉप्स, ईवी चार्जिंग स्टेशन, आई थिंक एवरीवन बेस्ट मेरे हिसाब से ईवी का ही है, बेस्ट ईवी का लग रहा है Yes, मुझे। that will be better. पार्किंग के लिए भी तो बना हमें 2-3 ऑप्शंस रखने चाहिए ना। पार्किंग के ऑल्सो So EV and CNG station. What I was thinking. EV ओके and फाइन, ईवी एंड सीएनजी some फाइन। part we can keep for the CNG and some part we can keep for the. गाइस actually EV गाइस आई वांट टू ऐड वन पॉइंट। कई बार ऐसा होता है हाईवेज पर होते हैं पेट्रोल पंप्स, तो वहां पे फूड वगैरह की अरेंजमेंट्स नहीं होती है, तो वो चीज भी हम कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्ट करके आगे लीज पर दे दें। एक्चुअली हम उसको मार्केट में that lease इंक्लूड कर amount लेते हैं will be सारी going to शॉप्स the को, रिपेयर शॉप owner. वगैरह को हम एक्चुअली में That मार्केट lease सेटअप amount कर will be सकते हैं paid by the अगर इसके owner of the अलावा petrol pump. एक्स्ट्रा लैंड है तो। That won't be. We won't be getting the benefit from the that restaurant thing. एक काम रहा space is, नहीं, ऐसा taken नहीं, by the- बहुत बार हाईवे पर क्या होता है, बहुत बहुत किलोमीटर्स तक हमें कुछ नहीं मिलता है, ऐसी अरेंजमेंट्स नहीं होती है, तो आई थिंक इट इज अ बेटर ऑप्शन। But बाकी that will be benefit for the वो owner of एक्चुअली the रूरल petrol के लिए pump, नहीं, not हम for अभी the सिटी के बारे में HPCL. डिस्कस कर रहे हैं। पेट्रोल वगैरह हुआ है। Just गाइस आई थिंक हमें कंक्लूड करना चाहिए, अभी conclude टाइम करना कम चाहिए। है, पॉइंट जॉट डाउन कर लेते हैं। तो रूरल के लिए एक्चुअली वी गो फॉर ईवी फॉर अर्बन फाइनल। ओके 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 ठीक है, तो ईवी के लिए अब सबसे पहले मार्केट में सर्वे करना है अपने को।
सर्वे एंड एक्चुअली हम उसको 2-3 ऑप्शन बता सकते हैं ना, हमें एक सजेस्ट करना है, हमें एक्चुअली में डिसाइड उसको करना है, तो हम उसे 2-3 ऑप्शन बता सकते हैं जो उसके लिए कल भी सर ने Actually बोला में। था, आप हाइपोथेटिकल असम्पशन लेके नहीं चल सकते हो। सर्वे करने हाँ। के बाद हमें पता लगेगा कि वहाँ पे बिल्कुल। क्या क्या चीज की नीड है। हाँ हाँ तो हाँ हाँ रेस्टोरेंट आई थिंक होना चाहिए, और कुछ वैकेंट लैंड भी हम लीज पर दे सकते हैं। अगर ये आगे अर्बन की टाउन में किया है तो अर्बन में 3-4 पार्किंग के लिए तो हम ऑप्शन हो गए, आई थिंक 3 या कर रहे हैं 4 ऑप्शन हो गए एक्चुअली में। कार से एक रिलेटेड। ईवी का, एक सीएनजी स्टेशन का, एंड और एक एक मार्केट लीज पे देने सेटअप का। का, We'll और एक discuss मार्केट about सेटअप। अगर petrol किसी bunks किसी in भी rural टाइप का मार्केट places. सेटअप, जैसे रिपेयर शॉप एंड अदर टाइप्स आल्सो। एक छोटा वो सा एक रूम टाइप से में लीज में मान इंश्योरेंस लेते हैं। ऑफिस अगर ओपन कर दे तो वहां से भी ओके ओके ओके। मिल जाएगा उसका। और इंश्योरेंस I al- ऑफिस के लिए कोई I ज्यादा also बड़ी have a चीज नहीं चाहिए, तो वो वही कर अब देते हैं एक्चुअली में पेट्रोल हमें वाला। रूरल में चलना हाँ, चाहिए, बोला रूरल में चलना चाहिए। रूरल की बात करते हैं कहीं। I रिपेयर also शॉप have लगा a- सकते हैं हम। अरे आई ये बिलीव अर्बन के लिए रिटेल आउटलेट वही बेटर रहेगा और कार सर्विस बेटर रहेगा, क्योंकि वो लोग को बहुत दूर तक ट्रेवल करना पड़ता है छोटे छोटे सर्विस लेने के हाँ। लिए या एक जेन्युइन सामान लेने के लिए, क्योंकि मार्केट में कहीं से लेता है तो हो सकता है एचपीसीएल का ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं मिले, लुब्रिकेंट्स ऑयल मिक्स्ड अप या डाइल्यूटेड मिले, थोड़ा सा Yes. जो भी। तो रूरल के लिए Lubricant will be फर्स्ट sold in रिपेयर the शॉप हो गया, packets, right? अदर To provide अदर the services. Lubricants will be सजेस्ट बात sold in करें the तो packets, so that won't be issue, I think so. And regarding that restaurant, these things, so we are actually petrol bunk works. We will be supplying the petrol and whatever the commission that type we'll be getting, and owner will be getting the that part. He will be paying the lease rent to the vacant land that will be paid by the owner only. So if we are talking regarding the restaurant, that revenue will be maximum going to the him only. So if it is rural, we can conclude that as a CNG station. CNG station we can keep in the rural also. In the urban, we have two options: EV station and CNG. That's what I was thinking, and think and finalize thing. I think Shiva, I want to add one point station here. also good, because in the every home CNG use, so actually this also be maybe good. सीएनजी यूज हमें- नहीं तो एलपीजी यूज guys- होता है। ओके, एलपीजी स्टेशन सेट कर सकते हैं, तो उसके गाइस लिए सबसे actually में- पहले सुनो, सबसे पहले हम सर्वे करेंगे तो ये सब ऑप्शंस हमें रखने चाहिए। ये ऑप्शन चलो, बाद में उनको- आएंगे, सर्वे अभी- के बाद ऑप्शंस आएंगे। हाँ, सर्वे हाँ, से तो पहले हम ऑप्शन सर्वे- डिसाइड करना वो नहीं है। After feasible survey, नहीं है। we'll be getting these things only, according to me. These Whatever, things are if it is according rural, to us. if it is in the We are rural also, deciding not on CNG the station basis of requirement survey. will be there. ठीक है, मेरे हिसाब से तो तुम- अर्बन में ये फाइनल करते हैं, क्योंकि देखो अगर मेरे हिसाब से तो अगर अर्बन में है तो ये तो सीएनजी या फिर ईवी या थर्ड ऑप्शन लीज का रखते हैं, उसके अलावा कुछ ऑप्शन I रहते हैं। also had one लीज में क्या है कि point. अपने को कॉस्ट नहीं करना पड़ेगा, कोई भी कॉस्ट इंकर नहीं पड़ेगी, प्योर प्रॉफिट है वो अपना लीज I में। also had Profit, that Urban- profit will be to the owner of the petrol bunk, not to HPCL, I think so. That's अपने almost. को उसी ओनर के लिए करना है मेन, तो जो उसको बेनिफिट भी कर we सके। need to think from the HPCL point of view. As a marketing Not from the- executive, Then, we then we have to फिर तो ईवी like, और we सीएनजी have to फाइनल। that will be market our better. products. I can conclude that point. We Okay, should so do it. final करते हैं। can someone और provide the solution? Can any one of you now sum up whatever you discussed? Sir, I would like to sum up on the behalf of my team. I think sir, first we should सबसे पहले ओनर से बात करना चाहिए कि हम लोग के पास बजट कितना अवेलेबल है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लैंड कितना अवेलेबल है, और कोशिश करेंगे इंजीनियर से कंसल्ट करने के लिए। उसके बाद देखेंगे एरिया कौन सा, सर्वे करने के बाद रूरल एरिया है या फिर अर्बन एरिया है। अगर रूरल एरिया है तो हो सकता है उसमें मार्केट के अंदर एरिया में आपका ये खाली लैंड पड़ा हो, या फिर मतलब मार्केट के अंदर पेट्रोल पंप हो, या फिर वो हाईवे में पड़ता है। अगर मार्केट के अंदर पड़ता है तो सर वहाँ पर बेटर होगा कि रिपेयर शॉप और रिटेल आउटलेट्स ओपन कर दे, जो लुब्रिकेंट्स ऑयल वगैरह का होता है, ग्रीस होता है, कार रिलेटेड, वो सारे के सेल सर्विस के लिए। क्योंकि विलेज में पीपल को बहुत जाना पड़ता है दूर दूर तक ये सब छोटे छोटे चीज सर्विस लेने के लिए, और जनरली कभी कहीं जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है। इस कारण से कि एक एडिशनल इनकम भी जनरेट हो जाए अगर ये ओपन करते हैं तो। अगर ये हाईवे में है, और हाईवे में है तो रिपेयर्स और रिटेल आउटलेट की जगह पे सीएनजी हम लोग सर वहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि बाहर से अगर कोई कस्टमर आते होंगे और हो सकता है टाउन में दूर तक सीएनजी नहीं हो, आगे जाने तक अगल बगल दूर दूर तक सीएनजी नहीं हो, तो यहाँ पे सीएनजी होने का एक बेनिफिट मिल जाएगा, मोनोपोली हो जाएगा पेट्रोल पंप ओनर के लिए। अगर ये लेकिन अर्बन एरिया रहता है तो कोशिश करना चाहिए वहाँ पर ईवी को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि फ्यूचर ईवी है, उसमें अगर स्विच करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और सीएनजी भी वहाँ पर लगा सकते हैं, सीएनजी, क्योंकि अर्बन में बहुत जगह अभी भी
नहीं अवेलेबल है। और इसके अलावा रिटेल शॉप, रिटेल आउटलेट वगैरह ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पॉसिबल रहा, अगर दूर दूर तक पॉल्यूशन बनाने वाला जो व्हीकल होता है या फिर जो बोर्ड है वो नहीं है, तो वहाँ पर एक छोटा सा आउटलेट वो ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा एडिशनल इनकम के लिए वहाँ पर किसी थर्ड पार्टी को लीज पे या फिर ऑफिस के लिए रेंटल पर्पज के लिए दे सकते हैं, जैसे कि कार का जो इंश्योरेंस रिन्यूअल ऑफिस वगैरह होता है, या फिर कोई इससे रिलेटेड चीज के लिए एक रेंट पे देंगे तो एक एडिशनल इनकम आ जाएगा। थैंक यू। Okay, now you see the case study which was given to you. This is a petrol pump, and there's a lot of land area under that petrol pump, but still that area is available. You have to suggest the steps to the owner of petrol pump. That means it is not under HPCL direct control. It is under, it's a, not corporate pump, petrol pump. It is owned by someone. To generate funds, that is very, very important. I mean, you want to generate funds. That's what I have said. And earn through resources which are available, and the resource which are available are the land, large resource. So how you can use his land to earn the funds, to basically generate the funds. No, because that land belongs to petrol pump, you cannot sell the land and get the resource. You need to use the land. That is something which is important. Now when you say that how much budget he has, what is this question? What budget he will have? He is not sitting with any budget. You are going and telling him how much he can earn, and maybe how much SPCL can earn through that. So that wrong, the direction was wrong when you are saying, okay, what budget you have, let me suggest what budget you can invest. Suppose somebody say, I have only land, can you earn something for me without I selling my land? What option will you give him? You said leasing the land, okay, that can be one option. But normally companies hesitate leasing the lands. Why? Because normally companies also take the lands on lease. The HPCL and all these companies, they don't purchase the lands. They take the land on lease only for 100 years or 50 years, something like that. But they have taken more land, maybe thinking about, expansion or something. Now, one point was relevant, like let's find out where this petrol pump is. Highway or city or remote area or what. If it is on highway, you can think of different. If it is in the city, you can think of different. Now, naturally for petrol pumps, one of the option which goes along with petrol pumps is food joints. You can, people stay there and they can have food also. If your petrol pump is located such that people on the travel on highway or something while traveling, they'll feel like staying there. You can create different kind of food chains. Maybe you will contact the people like, the Subways and KFCs and all these pizzas. So maybe couple of people you can contact, and you will try to create some kind of, food joints over there, because the customers will flock only if they get a couple of options. Suppose you have Subway, you have KFCs, you have McD also. So suppose these couple of things, and maybe, your local Indian brands of eating food joint, something. So for that, you need to put effort. You need to call these guys and ask them, are you interested for this? This is the place we have and all. So if you create something of that, and maybe some local eating joints also, then maybe that traffic. And so you need to do the survey. I mean, will the people stop there? And do not suggest him anything which will incur some cost to him. Don't suggest him anything. So you will only tell him that you do this, and maybe you will start earning the money in the beginning. When KFC guy comes, somebody else comes, he will also rent out your building or your area or your space. He will create in his own infrastructure, but on the land which you provide to him. Something like that can be created. So that can be the one option. And another option, if within the city also food giants are there also, you can go for that. I have seen the concept of, 24/7 concepts, like entire night the things are open, people can come and purchase something from there. Those kind of things can also be created. And sometime even motel can also be created, not hotel but motel. Somebody is traveling, wants to stay overnight, they can also be created over there. So these are a couple of options maybe you can suggest him. And one of the option which you suggested is EV. That is also good option. Electric vehicles also charging infrastructure requires space. Petrol pumps do not have space. So your petrol pump is having space, and charging infrastructure can very well be integrated there, but you need to see whether there is a demand for that or not. You have created charging infrastructure, but you are not incurring the profit, you are incurring losses. I mean, you have created anything, was creating charging infrastructure will incur some expenditure.
on part of that particular fellow. So there you need to ask him, can you invest? Because charging infrastructure you have to create. So that is what you have to see. I mean, where the location of the petrol pump is, then couple of options on the table. Some options you are not to spend any money. Another option you have to spend some money, but then you start earning the money. So those kind of things are to be done. So first priority should be given to the the benefit or interest of the company, HPCL. So if e-vehicle charging infrastructure is the need of HPCL, then that is to be given priority rather than creating food joints or something. So along with food joints, some recreational facilities for kids and children can also be created. So utility stores, 24 hours open utility stores, food joints, recreational facilities for children. So restaurant, those kind of things, or e-vehicles. These are a couple of options on table which we can think of, and we have to take the best call depending upon the need, place, locations, and all. Now you see, Priyanka started the discussion, but Priyanka could not speak anything about the topic. She started the discussion, but then she opened a house for discussion. So Priyanka, once you open the house for discussion, so you need to add certain things there. You need to speak one line or two. Yogendra talked about e-vehicles and battery swapping and all these areas to be analyzed. That is what he said. Simran said budget available. So again, Simran, your thought process was in wrong direction, but then you talked about lease. That was okay. Construction, again, not okay. So let's construct something on that. Owner will not spend money. What is the budget with you? He said, I don't have any budget. So, okay, can we lease out your land? But already this land is on lease. So these are the things you have to see. Divya said, okay, construction of warehouse and then lease. But again, warehouse, have you done the analysis warehouse will work there or not? Because warehouses don't work always. So you constructed a warehouse, it is of no use now. You made him loss. Rohita said, okay, area ka survey we will do and area we will see what is the demand of the area. Shiva talked about electric vehicles. So these, you people gave the points. But one thing which I'm seeing so far in all the group tasks is like you guys are not making consensus. The moment GD starts, start making consensus from the very beginning. Don't wait. It is like, you are attempting a paper and you're saying I'll solve all the 150 questions first. And then I will take that, small take you do A, B, C, D, A, B, D. And then what happens? The person comes, takes paper from you. You say, oh, I solved 150 question, but I forgot to mark it. That is what is going to happen with you guys. Why? Because you are discussing everything, but you are not jotting down the points. And then observer is going to pop up suddenly because he will not give you time beyond a limit. Actual time is 15-20 minutes. I'm giving you more than half an hour for practice. But even in half an hour, you people are not reaching any consensus. You are discussing, but not putting that thing in structure form. So what is very important is you solved one question, tick it. Tick the answer. Second question, tick the answer. That means you got some idea. Okay, write it. Consensus is built. Everybody agrees. Okay, e-vehicles, so many people. Okay, let's keep this as one of the options. Okay, now friends suggest something more. Okay, food joints. Okay, everybody agrees. Food joint should be done. Okay, done. Now, how food joint in highway can be different from the city? Okay, any idea? Okay, on the highway, food joint should not be like, snacks. It should be like food, proper food or something. So, but in the city, it can be, like snacks also. So, okay, agreed. So this is what we have to do. So keep finding the solution and keep jotting down. Some of you keep jotting down. So keep making the consensus. After every some time of discussion, ask everyone, okay, friends, are we on the same track now? Are we on the same agreement? I mean, this is okay for all of you? Let's say, okay, for all of us. Then you write it out. That part is missing in all of you as of now. You are discussing, but at the end, you will not be knowing that how to summarize it now. That is what exactly is happening. Then in that situation, what happens? One fellow concluded, others say, okay, he has not concluded my point. So he also started concluding. So that is not good actually. So this is what all from my side. So anything you want to ask or tell now? Regarding that food chain, actually HPCL won't be hearing from that point, sir. That's the reason I said to EVs and CNG stations. HPCL will not be taking anything from the food chains or all these points. They will not be taking means? They will not be earning anything from the no, see, you see this particular case study again. What steps can you suggest to the owner of petrol pump to generate funds and earn through the resources available? So where it is written that HPCL is to generate the profit.
maybe you are helping that owner only to generate the resources. And if the land is taken on lease by HPCL, then whatever profit comes, it will be shared by owner and the HPCL both. So you were only to suggest the means by which you are to earn the resources. So you must have seen, these case studies are based upon your common observation. Now ask yourself, close your eyes and ask yourself, you must have seen many petrol pumps. Have you not seen these kind of things on the petrol pumps? I mean, if you travel across the road, and all these ideas which I'm sharing with you on the basis of my own personal experience. When I went to some petrol pump, I found 24/7 also there. I found, things like food joints also over there on the highways actually. So, but that should be conducive place. And I saw that the income of the petrol pump also increases. Can you tell me how? Income of the petrol pump will also increase. Even if the income of the food joint does not belong to HPCL, but petrol belongs to HPCL. Income of that also increased. Can you tell me how? सर कोई खाने जाएगा वहाँ पे खाना खाने के लिए रुकते हैं तो Why will stop? Once he stopped for food, he say, okay, petrol pump वहीं डलवाते हैं. They are linked, no? And don't give this kind of suggestion that, okay, sir, let's open the liquor shop there, because I've seen a lot of crowd on the liquor shops. So hesitate saying that, because on the highway, but you don't want to open the liquor shop on the highways. So don't do that. One of the GDs said, yes, he said, sir, there are a lot of craze of the liquors nowadays. So what do you say if a very big wine shop we open there on the yeah. So more business is from the wine only than from petrol. So you don't give these kind of points, right? Anything you want to ask, Hotel? सर पार्किंग एरिया भी बना सकते हैं क्या? पार्किंग एरिया में पैसा नहीं मिलता यार. पूरा दिन पार्किंग करोगे तुम, एक गाड़ी का तुम्हें 100 रुपए मिलेगा, उसका फायदा नहीं होता. पार्किंग एरिया का बेनिफिट यू डोंट गेट एक्चुअली. एंड वेयर पार्किंग, वेयर आर इट? सो if it is main city, then maybe probably you can think of doing that. But eventually we have seen parking do not provide you profit actually. Again, that is a common observation you need to have, right? एटीएम मिलते हैं काफी कई जगह पे. एटीएम तो नेसेसिटी है ना, बिजनेस के लिए नहीं होता, वो नेसेसिटी होता है. वो तो तुम्हें वैसे भी फैसिलिटीज है. पेट्रोल हवा भरने वाला पंप है, तो वो तो तुम्हें देना पड़ता है ना यार पेट्रोल पंप पे. वो तो तुम्हें पेट्रोल पंप पे हर जगह एटीएम नहीं मिलते हैं, बहुत जगह पे मिलते हैं जहाँ पे हर जगह नहीं होता, और हर जगह पे हवा भरने वाला पंप भी नहीं होता. तुमने देखा उस चीज को? पंप वाला तो मैक्सिमम मिल जाता है, बहुत कम जगह पे नहीं मिलता. मैक्सिमम देना पड़ता है उनको, देते फ्री भी नहीं है वो. नाउ यू गाइस आर गोइंग टू जॉइन HPCL. दैट इज माय रिक्वेस्ट टू यू, गेट ऑल द एयर पंप्स ऑपरेटिव, बिकॉज़ उसमें प्रॉफिट नहीं होता ना उनको, इसलिए दे डोंट डू दैट. आई आस्क्ड मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स, यार देयर इज अ सरप्राइज फैक्ट टू मी, पेट्रोल पंप्स पे जो हवा भरने वाला पंप है वो क्यों नहीं चलता? पेट्रोल तो हमेशा मिलता है, हवा नहीं मिलती, क्या रीजन है? उससे ज्यादा हवा भरने के पैसे नहीं मिलते ना उन्हें. So we'll not do that. सर वैसे तो वो दूसरा वेंडर रख लेते हैं, लेकिन वो खुद की मशीन खराब होती है, लेकिन वो दूसरे वेंडर को रख लेते हैं, वो भी फ्री में भरता है जो मेनली रखते हैं. मैंने कई जगह नोटिस किया. नॉर्मली चार्ज नहीं करते, नॉर्मली द कंडीशन इज डोंट चार्ज. हाँ, वो जो हाइड्रोजन वाली गैस जो इनके प्रॉपर जो पंप पे मिलती है, वो वाली मैक्सिमम खराब ही मिलती है. Right, so this is all about from my side. So keep practicing, I mean keep developing the ideas how it is to be done. As I told you, you know, if you listen to 50-20 GTs and if you participate 5-6 GTs, baat kar rahe, today you were talking. I'm happy that you guys were chirping today, right? So chirping is the first stage. You start chirping first, and then next stage comes, you will start talking sense, and then you'll start listening, and then the flow will be maintained. The ideas will come. Ideas will not come in the beginning. First you need to open your mouth, and when you open your mouth, no innovative thing will come. The second stage will come, you will start thinking, then innovative things will start coming. So you need to practice till you reach that particular stage, right? Chalo, good night to all of you, and I catch you tomorrow also. Okay sir, good night.